अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस व्हाट वी कॉल पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यही आज का टॉपिक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, पहले इंपॉर्टेंस, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम graph of uniform motion along a straight line or straight track. Okay, पहले इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। एंड motion कैसी है? Uniform motion. It is not uniform accelerated motion. It is uniform motion. As you know that uniform motion means the velocity of an object is constant. ठीक है ना? Okay. Both in magnitude as well as in direction. So for that we will consider a straight track. This is straight track. Okay. O is the origin or the measurement of the position. Suppose the object is moving along this track with constant velocity. Suppose initially the object is somewhere here at a point A. ठीक है ना? तो इसकी यहाँ पे जो पोजीशन होगी, suppose it is position with respect to what? The origin is x0. This is clear? At time t equal to 0, initial position, and it is moving with some velocity, suppose v, on this track. ठीक है? Around this straight track. Suppose here is the final point B. We would like to study its motion from A to B. ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे, the graph would be a straight line, as you know, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, हमने प्लॉट भी किया है ग्राफ, पर आज हम इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज टाइम एक्सिस हियर, दिस इज पोजीशन एक्सिस। ओके, यहां से पोजीशन ले लेंगे, पोजीशन मेजरमेंट, यहां से टाइम मेजरमेंट। ओके, एंड नाउ here the object is initially here at point O, so its initial position is x0 with respect to the origin. ठीक है, यहां पे इस तरह से दिखा सकते हैं x0। ठीक है, so x0 is the initial position, therefore the graph will start from this point. And the graph is a straight line. Here is the initial position, x0 at an instant of time t equals 0. Okay, if the object starts from the origin, then जो इनिशियल पोजीशन होगी वो भी 0 होगी, तब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो तो यहां से स्टार्ट होगा। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द टाइम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, ओरिजिन से स्टार्ट होगा यहां से। इज दिस क्लियर? तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है इनिशियल पोजीशन इज x0. As it is moving with constant velocity, so it means that जब velocity constant होगी, the body covers equal distances in equal intervals of time, and it is due to this reason that the graph comes out to be a straight line. Okay, and now on this graph we will consider 2 points. Suppose P is one point and another point is somewhere here Q. 2 points. From point P, drop 2 perpendiculars. One on the time axis, second on the position axis. Similarly, from point Q, drop 2 perpendiculars, one on time axis, second on position axis. Okay? Okay. ये इस पर हम नाम रखेंगे P P1, P P2, Q Q1, Q Q2. This is clear to you? एक जो perpendicular हमने ड्रा किया P P1, it cuts the time axis at a point here P1. P1 is the foot of the perpendicular. So this suppose this, therefore यहाँ पे हम assume करेंगे, यहाँ पे जो instant of time है, that is T1 is the time. So T1 is the time corresponding to point P. Is this clear to you? Yeah, we can say corresponding to point P on the position time graph. T1 is the time. Is this clear to you? Similarly, यहाँ पे suppose T2 is the time corresponding to a point Q on the position time this graph, position time graph. Is this clear? Okay. अब इस T1 correspond to T1,
ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन होगी, सपोज इट इज x1 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम t2, x2 इज द पोजीशन। एज क्लियर टू। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, टाइम कोऑर्डिनेट होगा t1 एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा x1, और जो पॉइंट Q का जो टाइम कोऑर्डिनेट होगा दैट इज t2 एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा x2। इज क्लियर टू। ओके, एंड नाउ यहां से अब एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम पॉइंट P ऑन दिस Q1 इस तरह से, एंड इट कट्स दिस लाइन Q1 सपोज एट ए पॉइंट M। यहाँ पे M ले लेंगे, M इज द पॉइंट, एंड हियर दिस लाइन PM इट इज पैरेलल टू व्हाट, टाइम एक्सिस। देयरफॉर ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसका नाम रखेंगे हम थीटा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद व्हाट, विद द टाइम एक्सिस। ये वही, अगर हम यहाँ से इसको प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से भी ये थीटा आएगा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन टाइम ग्राफ एंड द time axis. The position time graph is inclined to time axis at some angle. This is that angle. ठीक है ना। अब ये थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, so equal होगा because corresponding angles. ठीक है ना। And now theta is the angle here. अब यहाँ पे देखिए from this graph, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है it is t2 from graph, यहाँ पे लिखेंगे from graph। शाबाश। What is OT? OQ, sorry, OQ1, it is T2. And what is OP1? It is T1. Is this clear? Therefore, जो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी, या सॉरी जो यहां से यहां तक टाइम इंटरवल होगा P1 Q1, it would be equal to OQ1 minus OP1. So this will become P1 Q1 is equal to, what is OQ1? OQ1 is T2, तो माइनस यहां पे आएगा OP के बदले, OP1 के बदले T1। इज क्लियर। सो इसका मतलब यही हुआ, जो टाइम है O से लेकर Q1 तक इट इज T2 टाइम, जो O से P1 तक जो टाइम है दैट इज T1 टाइम। अब जो यहां से जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा T2 minus T1. This is P1 Q1 represents time interval T2 minus T1. Is this clear? Okay. And इसी तरह से अब ये जो लाइन है P1 Q1 it is equal to what? PM also because this is a rectangle. In rectangle opposite sides are equal and parallel. So P1 Q1 is equal to T2 T1 and is also equal to what? यहाँ पे लिख सकते हैं PM. Similarly, यहाँ पे देखिए, this is a rectangle. Is this clear to you? And this rectangle, OP2 जो है, OP2, it is equal to Q1M. Is this clear? Okay. या इस तरह भी लिख सकते हैं, Q1M is equal to OP2. So we can write as what is OP2? It is X1. इसी तरह से सिमिलरली Q1Q is equal to what? OQ2 because opposite sides of a rectangle equal and parallel is equal to X2. अब ये डिस्टेंस देखें किसके बराबर होगी, therefore MQ. So MQ is equal to what? Q1Q minus Q1M. Q1Q minus Q1M. Is this clear? Okay. So what is Q1Q? It is X2 minus Q1M. It is X1. Is this clear? तो MQ जो यहां से निकला it is equal to change in the position X2 minus X1. So this distance, ये जो length है of the line MQ, it represents what? Change in the position. अब जो ये लाइन है it represents change in the what? Time या time interval T2 minus T1. Time taken. Is this clear to you? Okay. अब now
from this graph, we will measure the slope of the graph. Slope of PQ, जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप मेजर करेंगे. तो स्लोप इज गिवन बाय एज नो दैट टेंजेंट थीटा. तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? दिस इज थीटा रेफरेंस एंगल, इसका जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं. दिस इज देयरफॉर कॉल्ड बेस, दिस हाइपोटेन्यूज. सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर divided by base. What is perpendicular in this triangle, in this right angle triangle? It is QM. What is base? Base is PM. Put for QM, what is QM? It is x2 minus x1 divided by what is PM? PM is T2 minus T1. So what is x2 minus x1? It is change in position. Change in position. Divided by what is T2 minus T1? It is time interval. Yeah, time taken. Time taken or time interval. Is this clear to you? And according to definition, the change in position per unit time is called velocity. Is this clear to you? Velocity. So what is the meaning of this? So tan theta is the slope. So slope of PT graph gives what? Velocity of the object. This is the importance of the position time graph. So what is the importance of the position time graph of uniform motion along a straight line? The importance of the, thus यहाँ पे लिख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे. The importance of position time graph of uniform motion along a straight track or line lies in the fact that its slope gives the velocity of the body or object. This is clear to you? The importance of a position time graph of uniform motion along a straight track lies in the fact that it is slope. जब हम इसका slope measure करेंगे, it gives the velocity of the body. तो उस body की जो velocity क्या होगी वो हम ग्राफ के लिए हम measure कर सकते हैं. Is this clear to you? हमें खाली measure क्या करना है? इस ग्राफ का slope measure करना है. Is this clear? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे importance of velocity time graph. Velocity time graph. Now we will discuss the importance of what? Importance of velocity time graph. ठीक है ना? Velocity time graph of uniform accelerated motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे आएंगे हम. तो वहां पे हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं. एज यू नो दैट, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? जो एक्सेलरेशन होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it remains constant. It doesn't change during the time. With time, it's during the motion. Okay, then the object is said to have uniform accelerated motion. ठीक है ना? इसकी acceleration constant रहेगी. तो यहाँ पे suppose first, in this case we will take a straight track because acceleration is constant. Therefore, it should be one-dimensional motion. ठीक है ना? One-dimensional motion में ही acceleration constant होती है, velocity constant होती है. So it is an example of one-dimensional motion. This is straight track, and suppose body is moving along this straight track. O is the origin of the position axis. ठीक है ना? With respect to which we will measure the position and the velocity of the object. Suppose initially the object somewhere here at an
at a point A at an instant time t equal to 0, initial position. So this is the initial position. So initial position हम x डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन हमने डिस्कस करनी है, हमें वेलोसिटी एंड टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि पोजीशन क्या है. तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एट पॉइंट ए, इसकी जो वेलोसिटी है, इट इज मूविंग विद इट्स वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी u. So u is the initial velocity. ठीक है ना? As the motion is uniform axillary motion, therefore its velocity will continuously change by equal amounts in equal intervals of time, as you know. ठीक है ना? Okay, suppose it reaches somewhere here at point B, तो यहाँ पे इसकी velocity है v. So v is the final velocity, okay? At an instant time t, उसको time t होगा. अब हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ would be like this, velocity time graph for such a motion, accelerated motion, uniform accelerated motion. Again we will, यहाँ से ले लेंगे हम velocity, यहाँ से ले लेंगे हम time. Here is the origin O, and the graph is again a straight line inclined to time axis. Okay. अब यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है. It starts from the velocity axis because its initial velocity is not zero. It is not starting with rest. It is not starting from rest. Rest से start नहीं हुई. इसकी initial velocity कुछ ना कुछ है. That is u. तो जब initial velocity u है, so u is the initial velocity here at an instant time a. At position a. जब position a था, उसको initial जो इसकी velocity थी, that is u. At an instant time t equal to 0. This is clear? Okay. अब ये बॉडी मूव कर रही है, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, जैसे पहले मैंने बता दिया और दिखा दिया, इट द ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड अगेन ऑन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी विल कंसीडर 2 पॉइंट्स, पॉइंट P and point Q. Okay, from point P draw a perpendicular on the time axis. Here the corresponding time, suppose is t1. So it means that point P is the point on the velocity time graph corresponding to an instant time t1. Okay, and similarly drop another perpendicular from the point Q on the time axis. Is this clear to you? Okay, here is the foot of the perpendicular. It touches the time axis at a point. And suppose t2 is time, it represents t2 time corresponding to a point Q on the velocity time graph. Okay, and now similarly draw another perpendicular from point P on what? On the velocity axis. Similarly यहाँ से भी एक और perpendicular draw करेंगे on the this velocity axis. Okay, इसका नाम रखें P1, इसी तरह से this P2. And this is Q1 and this is Q2. Is this clear? तो अगेन जैसे पहले मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में दिखा दिया, इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसी तरह से हम दो पॉइंट ले रहे हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. ठीक है ना? Okay, this perpendicular cuts the QQ line at a point, suppose M. Is this clear? Suppose theta is the angle between what? Velocity time graph and the time axis. So velocity time graph जो है, it is inclined to time axis in case the motion is uniform accelerated motion. अगर uniform accelerated motion होगी, अगर non uniform accelerated motion होगी तो straight line नहीं आएगी, तो ये curved line कुछ हो गया इसे. ठीक है ना? Straight line indicates that the motion is accelerated motion, uniform accelerated motion. Okay. Now from the velocity time graph, from the velocity टाइम ग्राफ जो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इस ग्राफ में देखिए आप, अब जो OQ1 है, we can write it as OQ1. It is equal to what? T2. It represents time T2. And अब जो OP1 है, OP1, it represents time T1. OP1 represents time T1. OQ1 represents time T2. अब इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना? वो किसके बराबर होगी? OQ1 माइनस OP1, वो आएगा P1 Q1 के बराबर. ठीक है ना?
Okay, so therefore P1 Q1 is equal to what? OQ1, we can write as OQ1 minus OP1. So put for OQ1 and OP1, you will get T2 minus T1. This is P1 Q1. And this is a rectangle. O, यहाँ पे देखिए PM Q1 P1 is a rectangle. Opposite sides are equal and parallel. Therefore, we can write PM जो है, it is equal to what? P1 Q1. And both equal to what? Time interval T2 minus T1. ठीक है ना? Okay, this gives the time interval T2 minus T1. ओके या इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट में डेल्टा टी यहां से यहां तक है इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम इंटरवल। एंड नाउ इसी तरह से यहां पे देखिए वर्टिकल डिस्टेंस जो है अगेन शाबाश दैट इज Q1 Q रिप्रेजेंट्स यहां से लेकर यहां तक इट इज इक्वल टू व्हाट OQ2 OQ2 कैसे? Again this is a rectangle, opposite sides are equal and parallel, therefore Q1 Q is equal to OQ2. What is OQ2? यहाँ पे देखिए मैंने नहीं बता दिया, T1 is the corresponding is time corresponding to point P on the position time graph. इसका जो corresponding velocity ले लेंगे यहाँ पे जो इसकी velocity है, suppose it is V1, ठीक है ना? यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, यहाँ पे लिया एक और पॉइंट Q, यहाँ पे इस जब इंस्टेंट टाइम था T1 उस वक्त वेलोसिटी थी V1, जब एट इंस्टेंट टाइम T2 तो ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर एट पॉइंट Q, उस वक्त टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टाइम था T2 एंड वेलोसिटी थी V2। अब ये इंटरवल ले रहे हैं, ये छोटा सा इंटरवल, ठीक है ना? दिस इज द इंटरवल एंड नाउ सो V2 सपोज वी विल सपोज हियर V2 इज द velocity corresponding to an instant time T2, velocity of an object. Is this clear? Okay. And now QQ1, what is QQ1? It is equal to what? OQ2. OQ2 is V2. यहाँ पे V2 लिखेंगे. And what is? इसी तरह से हम लिख सकते हैं Q1 and M. This is a right angle. Opposite sides are equal. QM is equal to O P2 O P2. So what is OP2? It is V1. Is this clear? Okay. Now यहां से देखेंगे MQ किसके बराबर है? Therefore MQ जो है it is equal to what? It's equal to, from the graph it is clear, Q1Q में से इतना माइनस करेंगे, वहां से यहां रहेगा इतना MQ, तो लिखेंगे यहाँ पे M Q1M सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करना है इसको। पुट फॉर Q1Q and Q1M, Q1Q and Q1M, यहाँ से V2 माइनस V1 आएगा। तो डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज वन डायमेंशनल मोशन। डायरेक्शन हर एक की सेम है, हर एक जगह वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन है। V1 की जो डायरेक्शन है V2 की भी डायरेक्शन है। So we can drop arrows here. Okay. तो यहां से जो ये इंटरवल है यहाँ पे M से Q तक, it represents position interval. डेल्टा x से रिप्रेजेंट करें, सॉरी it represents velocity interval. डेल्टा v से रिप्रेजेंट करें, it is equal to V2 minus V1. Is this clear? Similarly, जो ये यहां से ये रिप्रेजेंट करता है टाइम इंटरवल। एंड नाउ स्लोप हम मेजर करेंगे अगेन, जैसे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मेजर किया, इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मेजर करेंगे। स्लोप इज गिवन बाय टेंजेंट थीटा। इज दिस क्लियर? तो स्लोप इस लाइन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हम मेजर कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? इट इज M Q is perpendicular. What is base? Base is PM. Put for MQ. What is MQ? जो अभी मैंने बता दिया, MQ it is change in velocity.
And PM, what is PM? It represents time interval. That's delta T, or we can write T2 minus T1. Is this clear? Okay. So V2 minus V1 is the change in velocity. Change in velocity. Divided by T2 minus T1 is time taken. Time taken, or time interval. So what is this accounted definition? Change in velocity per unit time, or time taken, is called acceleration. So it means that this implies that slope of velocity time graph gives what? The acceleration. Acceleration of the object. Is this clear to you? This is the importance of the velocity time graph. जो हमने देखा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ, वहां पे हमने जो स्लोप मेजर किया, वो स्लोप देता हमें वेलोसिटी. मगर अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मेजर करेंगे तो वो स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. Is this clear to you? So what is the importance? यहाँ पे लिखेंगे. Thus, the importance, we conclude that importance of velocity time graph of uniform accelerated motion lies in the fact that its slope gives the acceleration of the body. So it means that we can calculate, we can measure the acceleration of the body graphically from the graph. If you know the graph, velocity time graph, you can calculate the acceleration of the body just by measuring the slope of the velocity time graph. Is this clear to you? Okay. अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंस है इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. अब इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस भी है. वो इम्पोर्टेंस क्या है वो हम यहां पे दिखा देंगे. Okay. And now we will measure here the graph, this area bounded by the velocity time graph with the time axis in given interval of time delta t, t2 to t1. Is this clear to t1 to t2? ये टाइम इंटरवल है. इस टाइम इंटरवल में ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये ग्राफ पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू इंस्टेंट टाइम t1 एंड t2. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कितना एरिया कवर, ये बाउंड कर रहा है. द एरिया अंडर दिस पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना, with what? With the time axis in given interval, given instant of time, that is t1 and t2, given interval of time. ये मेजर करेंगे. अब देखेंगे वो किसके बराबर होगा. Now area. अब दूसरी इंपॉर्टेंस देखेंगे इसकी. अब यहां से मेजर करेंगे हम ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, बाउंड कर रहा है विद टाइम एक्सिस. तो ये पोर्शन हम ले रहे हैं यहाँ पे पी क्यू, ये पोर्शन ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. तो ये देखेंगे कितना एरिया बाउंड करेगा ये विद टाइम एक्सिस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t1 टू t2. इज दिस क्लियर टू? अब यहाँ पे इसका एरिया मेजर करेंगे, देखेंगे वो एरिया हमें क्या देगा. एरिया ऑफ व्हाट, this four-sided figure, that is P1 Q1 Q. Is this clear? इसकी जो शेप है, it is trapezium, ठीक है ना. And as you know that the area of trapezium is 1/2. Sum of two parallel sides, इसके दो parallel sides है Q1 Q and P1 P. P1 plus Q1 are the two parallel sides into जो इनके परमिटेबल डिस्टेंस, दैट इज PM और P1 Q1 भी लिख सकते हैं, PM भी लिख सकते हैं. ओके. इट कैन बी रिटन एज 1/2 P1 किसके बराबर है, इट इज V1 प्लस Q1 इट इज V2. ओके.
into what is PM? PM is the time interval, that is delta t. Yeah, we can write as t2 minus t1 as the time interval. And इसको हम देख सकते हैं v1 plus v2 divided by 2. v1 is the initial velocity at point P and v2 is the final velocity at point Q. v1 is the velocity at point P and v2 is the velocity at point Q. इतना ही पोर्शन हम ले रहे हैं यहाँ पे into t2 minus t1. t2 minus t1 is time interval. And what is v1 plus v2 by 2? It is called average velocity. This is called average, v average. यहाँ पे लिखिए. This gives the v average velocity. Sum of two velocities divided by 2. Because it is uniform accelerated motion, तो यहाँ पे average इसी तरह से आ सकती है. So v average into t2 minus t2 is delta t. हम लिख सकते हैं इसको, या we can write as average velocity into time interval. So what is this average velocity into time interval? So average velocity into time interval gives what? Gives the distance or the displacement. According to definition, velocity किसके बराबर होती है? Distance covered divided by time taken. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेस्ट निकलेगा किससे बराबर? v into t. So velocity into time, या चाहे ये velocity average velocity हो and time interval, ठीक है ना? Average velocity और velocity, चाहे अगर ये यूनिफॉर्म चेंज हो रही है वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो वेलोसिटी ले सकते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, दिस गिव्स व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज इक्वल टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिस्टेंस covered by the body in given interval of time delta t. Is this clear to you? So इसका मतलब ये हुआ, जो एरिया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाउंड करता है इन विद द टाइम एक्सिस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो एरिया किससे बराबर होगा? दैट एरिया इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. इज दिस क्लियर टू यू? तो इस तरह से हम यानी कि एक बॉडी जिसकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, तो उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो भी हम ग्राफ के लिए मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जस्ट बाय measuring the area bounded by this velocity time graph with the time axis in the given interval of time. This is clear to you? This is another importance of what we call velocity time graph. So what is the another importance of the velocity time graph? The importance of velocity time graph lies in velocity time graph of what? Of uniform accelerated motion. Lies in the fact that the area bounded by it with the time axis in the given interval of time is in given interval of time lies in the fact that the area bounded by it with the time axis in given interval of time gives the distance covered by the object in that interval of time. ठीक है ना? In that interval of time, उस इंटरवल ऑफ टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो जस्ट हम ये ग्राफ मेजर करेंगे, ये ग्राफ से हमें पता चलेगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी. इज क्लियर टू यू? तो इतना आज के लिए काफी है.
तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस है वो हम डिराइव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।